test expression. So there are course was it mean that that should be development of أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear student, today we want to discuss the rural development. This is your subject. There are so many things in rural area, but first it is necessary for the teacher and for the student to know the thing very well. What is rural area? What is development? And then you come to rural development. For this purpose, rural area, it is a great area where majority based on agriculture and natural resources. There, the situation is population density is low, while social solidarity is high. Each side you will see the greedy and people. ये आपके ज़हन में नोट करना चाहिए कि डेंसिटी हम किस चीज़ को कहते हैं. पॉपुलेशन पर किलोमीटर जितना मतलब एक अंदाजा है या विलेज जिसका हो, इसको हम कहते हैं डेंसिटी. जिस तरह आपने केमिस्ट्री में देखा है मास ओवर वॉल्यूम, तो इसको हम कमियत कहते हैं. तो इसी तरह आपको यहाँ पे उसको हम डेंसिटी. तो ये डेंसिटी जो है वो भी वही चीज़ है. Population density per kilometer population number is called population density. Now you are clear. So here the population density in rural area is low than the urban area. If you compare urban and rural area, you will create some differences. When you go to rural area, automatically you will see there the population density will be less than the urban area. But in urban area, the population density is high. So there you will see there the social solidarity is high. वहाँ जो ताल्लुकात होते हैं, मामूली मतलब झगड़ा हो या जो भी भारत के साथ, तो सारे लोग जमा होकर उसके लिए मतलब है वो काम करते हैं. यानी मुत्तहिद होकर उसका गाँव की प्रोटेक्शन करते हैं. तो वहाँ सोशल सॉलिडरिटी आई हुई है. और वहाँ जो घर अगर किसी का हो मामूली सा आपको तकलीफ हो, तो सारे मोहल्ले के लोग जो है वो जमा होकर आपकी मदद करेंगे. लेकिन यहाँ सिटी में अगर आप देखें तो इस तरह नहीं है. आपका घर इसके लिए कि आपके घर में गड़बड़ हो रहा है जो भी है, लेकिन कोई ज़्यादा मतलब है आपका मदद नहीं है. तो इसको हम क्या कहते हैं? ये है सोशल सॉलिडरिटी. उसमें सोशल सॉलिडरिटी मतलब ज़्यादा होती है. तो ऑलरेडी आपको पता चला कि what is rural area? Rural area is a great area where majority based on agriculture and natural resources. Now, what is agriculture? Biologic growth on the farm through scientific and active way is called agriculture. There are so many different raising of crops and livestock on the farm is called what? Agriculture. Cultivation of land is called agriculture, but this is not a scientific definition. The scientific definition, the biological growth on the farm